Hello students, my name is Amit Sharma. I am assistant professor in RPIT Karnal. Today in this class we will discuss about the second generation fluoroquinolones. In this previous class we will discuss the first generation fluoroquinolones, that is ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin and pfloxacin. Now in this class we will discuss about second generation fluoroquinolones, that is levofloxacin, lomifloxacin and sparfloxacin. First is levofloxacin, levo isomer of ofloxacin. So basically levofloxacin is the levo isomer of ofloxacin. Improved activity against Streptococcus pneumoniae and Mycobacterium tuberculosis. 100% oral bioavailability, no interaction with theophylline, warfarin, cyclosporin and zidovudine. No, because and less activity and more anti-emetic action. Lomifloxacin is a difluorinated quinolone. So basically जो है lomifloxacin जो है वो difluorinated quinolone है. Less activity, withdrawn in many countries due to QT prolongation and phototoxicity. Means some countries में इसको बैन कर दिया गया है. क्यों? क्योंकि ये जो QT प्रोलोंगेशन कोज करती है और फोटोटॉक्सिसिटी शोज करती है. और अगर ये QT प्रोलोंगेशन शो करेगी तो इन हार्ट पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस कोज कर सकती है. दैट्स वाई इट इज़ withdrawn in many countries. The next is sparfloxacin. Sparfloxacin is a difluorinated quinolone. Sparfloxacin is also a difluorinated quinolone. Enhanced activity against gram-positive bacteria. Withdrawn in most countries due to QT prolongation and phototoxicity. ये सम कंट्रीज़ में विड्रॉन कर ली गई है क्योंकि ये QT प्रोलोंगेशन करती है. दैट्स वाई इसको हम हार्ट पेशेंट में यूज़ नहीं कर सकते. एंड फोटोटॉक्सिसिटी ऑल्सो शोन बाय द sparfloxacin. That why it is withdrawn from some countries. Then next is moxifloxacin. And then next is moxifloxacin. So moxifloxacin is the broadest spectrum fluoroquinolones. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है मोक्सीफ्लोक्सासिन. लॉन्ग एक्टिंग है, हाई एक्टिविटी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, अदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इंक्लूडिंग बीटा लैक्टम, मैक्रोलाइड रेजिस्टेंस वंस एंड सम anaerobes uses. It is used in pneumonia, bronchitis, multi-drug resistant tuberculosis, sinusitis and otitis media. Adverse effect of moxifloxacin, it is caused QT prolongation and phototoxicity. The phototoxicity shown by moxifloxacin is rarely. Then next is gemifloxacin. The gemifloxacin is another broad spectrum fluoroquinolones. It is used in chronic bronchitis and pneumonia, community acquired, communicational, hospital and acquired. The adverse effect of gemifloxacin is skin rashes, QT prolongation and dizziness, rise in serum aminotransferases. So basically these are the second generation fluoroquinolones, that is levofloxacin, lomifloxacin, sarfloxacin and moxifloxacin and gemifloxacin. एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जो स्पारफ्लोक्सासिन एंड लोमीफ्लोक्सासिन को विड्रॉल कर लिया है. क्यों? ड्यू टू दे कोज QT प्रोलोंगेशन एंड फोटोटॉक्सिसिटी. एंड जो levofloxacin है इज levo isomer of ofloxacin and lomifloxacin and sparfloxacin is the difluorinated quinolone. थैंक यू स्टूडेंट्स. ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें.
Thank you.